हेलो एंड वेलकम टू मसूम मैथमेटिक्स। मैं आपका टीचर आमिर। और लास्ट वीडियो में जिस तरह हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हाउ इट फॉर्म्स एंड उसकी जनरल फॉर्म और प्योर फॉर्म कौन सी होती है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज की वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ को और एक दो क्वेश्चंस और करेंगे ताकि हमारी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन है एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू सिक्स। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था एक्स इंटू एक्स प्लस वन, हमारे पास एलसीएम बनेगा। एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट होकर एक्स जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर प्लस एंड दिस एक्स विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दिस एक्स एंड this x plus 1 will multiplied with x plus 1, so that is x plus 1 square equals to 6. Then x square plus 2x plus 1 over x square plus x equals to 6. यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है a plus b होल स्केयर, that is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, so cross multiply this. So open up the brackets, x square plus 2x plus 1 equals to 6x square plus x, and that makes 2x square plus 2x plus 1 equals to 6x square plus 6x. Taking all these to the right hand side, that will make 6x square plus 6x minus 2x square minus 2x minus 1 equals to 0. Okay, so 6x square minus 2x square, that is 4x square. 6x minus 2x minus plus 4x minus 1 equals to 0. So this is again a quadratic equation. Moving to the next question, that is x square plus 4 over 3 minus x over 7 equals to 1. Oh, okay, again we have LCM here, 3 into 7, and then 3 will be cancelled out from 3 and 7 will be multiplied with x square plus 4. 7 times x square plus 4 minus, okay, 7 will be cancelled out from 7 and 3 will be multiplied with x, that is 3x equals to 1. 7x square plus 4 times 4 is 28, multiply 7 with x square and then 4, that is equal to this, and then minus 3x is equal to this 21 will be multiplied with 1, that is 21. So 7x square minus 3x plus 28 minus 21 equals to 0. 7x square minus 3x plus 7 equals to 0. This is again a quadratic equation. So उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप और क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो समझना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।